Okay. So, hello, my dear bachas and bachis. I'm your Sudipta ma'am, welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. Tell me, how are you all? Calendar change कर दियंतु भूल रही जाइए सेटा. Yes. परेटा काली टिके डेट टाइम रे मते मने पके दबो. मैं ताको चेंज कर देबी, हैला. डे टाइम नै मते ठीक इवनिंग 7 to 8 एई भीतर मने पके मैं चेंज कर देबी, हैला. टिके शेयर वेयर हो सतीश भाई अच्छा तो क्लास रे ये लाइक भाई करूना शेयर करूना कथा कौन गोटे मिनिट मते देलो मो टिके एपट सेपट करिकी ताकू शेयर टा मार दूची. क्लास को आसो जते बेले संगे संगे गोटे लाइक करिके आसुनो कौन असुविधा होची को मते लाइक भाई करूनो तमानु कहिला जाय जाउची हां नहीं हाँ देखो तमानक इच्छा मु कौन कहि परिबी. गुड इवनिंग प्रणाम प्रणाम एक्सेप्टेड गायत्री गायत्री कौन आज बुले बुले सबुठी मते मेसेज करूची व्हाट्सएप रे कौन गायत्री मेसेज कलानी गायत्री प्रेरणा मैडम को नंबर मैडम को काली पचारिबी देन कहिबी प्रेरणा मैडम नंबर देबे ना नहीं हैला विदाउट हर कंसेंट आई कैन नॉट गिव यू. तो एनीवे आसा कहिदेली वेलकम हाँ हाँ वेलकम कहिदी राइट चलो डायरेक्ट पॉइंट ऊपर को जीवा. दिस वन इज डिसेंबर एटा चेंज कर दबो तम माने चलो हे ब्लैंक पेज कोड पळे आसिला एंड कर दबा लास्ट रे. तो तम माने जानि जो टेस्ट सीरीज रो प्राइस एंड ऑल ऑटो फोकस डन. अच्छा तो देखि दियो ए सब होची टेस्ट सीरीज रो ना जेमिति कि स्मृति टेस्ट सीरीज फॉर ऑल ओडिशा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन लाइफ टाइम अपन नहीं परिबे. दिस इज द फ्री वन. और OSSC टेस्ट सीरीज आपण माने PEO पाई नेबे 1 ईयर प्राइस 99. देन जदि RI मीन मेंस पाई नउचंती 1 ईयर 199 वैलिडिटी. SSC प्रीलिम्स जदि आपण नउचंती 20 टेस्ट पाइबे सबुटा हमर 2020 टेस्ट ही रहउची 1 ईयर पाई 199. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट SI टेस्ट सीरीज आपण को रहउची 20 सेट्स इन 299. All clear, audible and visible. तम मेसेज देखि कि ही गायत्री रिप्लाई देसी ठीक अछि. एबे मु क्लास करबी ना तो मेसेज पढिबी क्लास रे कोथि पे मु आछि तमर त एत्ति की कॉमन सेंस रहिबा दरकार ना कि क्लास टाइम रे मु मेसेज करूची तमे क्लास एंड पूर्वरु क्लास माने मेसेज करथांत या फिर क्लास आधा घंटे स्टार्ट हेबार आधा घंटे पूर्वरु भी करथांत हां नहीं कुआ बिकॉज़ तुमको गाली खाइबार अछि. तो विश्वास रहिला विश्वास रो OCS प्रीलिम्स रो जदि आपण माने बाकू चाहुचंती 2025-26 1 ईयर पाई प्राइस रहउची 6999. ओके जदि विश्वास प्रीलिम प्लस मेंस 2025-26 पाई प्रिपरेशन करिबा को चाहुचंती देन द प्राइस इज 11999. एंड जदि मेंस बैच पाई आपण नउचंती माने ऑलरेडी अक्टोबर 12 रे प्रीलिम्स देइथिले क्लियर हे जाईची मेंस पाई प्रिपरेशन करबा को चाहुचंती एक्सेप्ट द ऑप्शनल पेपर देन आपण मान नै परिबे 1 ईयर वैलिडिटी 8099. जदि ऑप्शनल पेपर आपण माने मागु चाहुचंती सेटा एक्स्ट्रा आपण क्लास जीवो 4999. am I clear जीवा. तो सेम थिंग आपनकर TGT माने टीचिंग एग्जामिनेशन जदि आपण माने द्रोण बैच नियंतु चाणक्य नियंतु कौटिल्य नियंतु द्रोण इज फॉर द SSB TGT वैलिडिटी 1 ईयर
ऑफर प्राइस 1499 एंड सेम चाणक्य बीएड फाइन आपण माने प्राइस नहीं परिबे 2 इयर्स रो वैलिडिटी सहित 1999 एंड आपण माने कौटिल्य बैच नेबे जोटा कि केवीएस एंड एनवीएस टाइम 1.5 ईयर वैलिडिटी सहित 2499 रहउची प्राइस क्रिस्टल क्लियर एडा जीवा पूर्व आपण मानकु कहि दोछि गोटे जिंस बढ़िया कि मने रख कि पढ़ाई कर लो ठीक है मैं जो बोल रही हूं उसको ध्यान से सुनो पढ़ाई कर लो एक दिन में बिल्कुल नहीं होगा मगर एक दिन बिल्कुल होगा अगर पढ़ाई ठीक से करोगे ना तो एक दिन में बिल्कुल नहीं होगा बोल रही हूं मगर एक दिन बिल्कुल होगा जरूर होगा ये माइंड में घुसा लो ठीक है चलो आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन who is king of Maukharis claimed to have defeated the latter Guptas पहिला मते which king of the which king the Mukharis claimed to have defeated the latter Guptas options are the Isan Varman Avanti Varman Graha Varman or the Sarva Varman कौन हवा राइट आंसर क्विकली को मते नमस्कार देवी प्रसाद पंडा मु भी पंडा तमे भी पंडा हमरा भाई भौणी ना कि आसा ऑप्शन सी केमिति सी आसुची राइट आंसर विल बी योर ईशान बर्मन सी the Isar Varman आपनकर कोन होउतंदी was the Mukhari king who claimed to have defeated the latter Guptas around 575 common era invading the Magadha and defeated the rulers कोन ना Damodar Gupta and Mahasena Gupta his victory made him the ruler of the last part of the Uttar Pradesh clear बुझी पारुछ और हैविंग एनी डाउट तो latter Gupta period हम कहि परिबा latter Gupta शब्द मगध एटा कि स्पेशली अगेंस्ट द कहार ना कुमार गुप्त तृतीयंक अगेंस्ट एटा थिला होना नै मते को तो ई गुप्त आपनकर लैटर ऑन कोठी बेंगल रे शासन करूथिले फास्ट बॉल वोल्ड अरे आसीबो एटा गोटे डिफिकल्ट थिला बाकी सब क्वेश्चंस इजी अछि डोंट वरी आसा द नेक्स्ट क्वेश्चन को मते व्हिच इरानियन ओरिजिन ग्रुप वाज नोन इन इंडियन सोर्सेस एज सक पल्लव तो सक पल्लव बोली हमें जहा को कहूचे तो को ग्रुप को नहीं हमें कहूचे कह जल्दी कह व्हिच इरानियन ओरिजिन ग्रुप वाज नोन इन इंडियन सोर्सेस एज द साक पल्लव बोली हमें कहा को कहूचे अमित जल्दी आंसर दियो ऑप्शन सी एटा भी तमानकर बोल्ड लागुची जणे सी माले सब सी मार दोछ देखो सब फॉलो करे चंद्रशेखर सब बेले राइट आंसर ही दियंती तो चंद्रशेखर महलिक ऑप्शन बी इज द राइट वन दैट इज द पार्थियंस काहा को हमें कहूचे पार्थियंस को कहूचे ऑप्शन सी तमानकर कोथि पय आसिला इंडो ग्रीक्स कोथि पय तमानकर एक रे तो इरानियन कहिला ईरान कथा कहिला इराक कथा कहिला ग्रीक्स मान को तमे रिलेट कर दोछ व्हाई दिस कोलैबोरेट डी गाइस व्हाई आसो तो राइट आंसर आपन एठी कोन होची ना दैट इज द पार्थियंस ओके नॉट सी द इंडो ग्रीक्स आपन कहि परिबा दैट इज द ग्रीक ओरिजिन that is from the Bactria आमे कहि परिबा कोटू ना इंडो आपनकर ग्रीक ओरिजिन हे जिवो ना ईरान ओरिजिन हबो नाही ओके क्वेश्चन को पढिले तो ऑटोमेटिकली आंसर जानि दबो ना पार्थियंस ले कोन कहूचे ना दैट इज द इरानियन ओरिजिन नोन फॉर द संस्कृत कोन संस्कृत हैला पॉलिटेक्स्ट हैला इगुडा करे मेंशन अछि दैट द पल्लवस एंड द साक पहल्या साक पल्लव हैला पल्लवस और द साक पल्लव मेंशन अछि दैट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रे 1st सेंचुरी कमन एरा रे आपनकर क्वेश्चन लेवल पूरा चाइनीज अछि हो देखो क्वेश्चन लेवल टिके वैराइटीज न रहिले आपन माने कोन जानि आसो सो द इन इंडियन हिस्टोरिकल सोर्सेस द पल्लवस रेफर टू द पार्थियंस an Iranian origin group they are often mentioned together with the Sakos that is the Scythians are the Saka Pallava both being Central Asian Iranian groups that entered Indian during the post-Mauryan period. Am I clear? Question level tough nahi Devi Prasad ita try karo jani paribo धीरे धीरे level mix heiki अछि tough nahi hela asa in which part of India did the earliest iron objects appear in the overlap between the Neolithic and the megalithic phases? You know about the
कोन ना आयरन एजेस विषय रे आपण माने जानि छथि को एज रे हमें आयरन ऑब्जेक्ट्स पाइथिले सेटा भी तो माने जानि छ यू आल्सो नोन अबाउट द Neolithic period and about the megalithic period but still जेतबे क्वेश्चन मॉडिफाई करी पचरुछि आपण माने आकाश को नै दोचंती हन नै म देखो सो अर्लीस्ट आयरन एज कोठी आसुची ऑप्शन कोन आसीबो मेगालिथिक कथा पचरिछि नियोलिथिक मेगालिथिक ओवरलैप केबे हेइथिला ऑप्शन ए साउथ इंडिया रे हेइथिला काहे कि साउथ वेस्ट इंडिया को पळेलो काहे कि साउथ वेस्ट पाखा पाखी आसुचो किंतु एपट सेपट कर दोचो मैम डिस्ट्रिक्ट सिविल कांस्टेबल रो पेड बैच आनंतु मुकेश प्रधान डेफिनेटली विल कंसीडर अबाउट इट ओके आसो तो साउथ इंडिया कोन कहूची दैट इज द अर्लीस्ट आयरन ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट 1200 2000 बिफोर कॉमन एरा रे आपनकर एटा प्रेजेंट थिला को साइट्स रे आपन मान देखि परिबे इवन कर्नाटक हैला तमिलनाडु हैला आपनकर हां कर्नाटक तमिलनाडु ए रीजन आपण मान देखि परिबे ओवरलैप हेथिला ऑफ द लेट नियोलिथिक जोटा कि अर्ली हमें कहि परिबा मेगालिथिक एविडेंस सहित इन द सेल्स आयरन टूल्स हैला ब्लैक एंड रेड वेयर हैला तो ए सबुथिरे आपनकर ओवरलैप हेथिला हैला 99% चंद्र को पेस्ट करिसंती हां चंद्र भूल गले त माने भूल हो कोन करिया आसा So, the earliest iron object in India are associated with the overlap between the Neolithic and the megalithic phases. Am I clear? Next question mate ko the Gopatha Brahmana, right, is related to which of the following Vedas? Rig Veda, Yajur Veda, Atharva Veda, or the Sam Veda? The Gopatha Brahmana is related to which of the following Vedas? को Vedas सहित relate अछंती मते कहिलो एंटोलिना को कॉपी कले केही ठीक हेबे नाही आंसर अच्छा काहा को कॉपी करिया पई मु तमानु कहमी दैट वाज जस्ट फॉर द किट आसो कुह जल्दी द गोपथ ब्राह्मण इज रिलेटेड टू व्हिच वेद को वेद कहूछ हां सब तो ढाबा बाडेलो यजुर्वेद अरे नाही रे अथर्व वेद कोन कहूची इट इज द अथर्व वेद ऋग्वेद कहिले कोन बुझुछ ना ब्राह्मण ऑफ द ऋग्वेद आपनकर आसीबे डिफरेंट ऑफ ब्राह्मण आपनकर कौशितकी ब्राह्मण सेटा आपनकर आसीबे बट यजुर्वेद हेले आपण माने जानिसंती मल्टीपल ब्राह्मण डिपेंडिंग ऑन द साकस एठी आपनकर साकस कथा कहिबो मेंशन करिवो साकस माने को पे डिपेंड करे टाइप्स ऑफ ब्राह्मण ग्रुप बट डेफिनेटली अथर्व वेद इज द कोन गोपथ ब्राह्मण मान को रिलेट करिवो हैला आसो In which of the following years did the British government publish the white paper based on the recommendations of the third round table conference? Hey आसो देखो easy questions आसिला what सब जाउचो देखो easy questions आसी गला खुशी हुआ गुड इवनिंग सर प्रणाम सर आसी गले की को सर आसी गले क्लास को सर आसी गले क्लास को केडी सर ना जोगेश सर हाँ जल्दी कुआ द ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिश द व्हाइट पेपर बेस्ड कौन पचाची ना थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कथा पचारिची एटा तो एटलीस्ट राइट आंसर दबो बोली एक्सपेक्ट मु करूची एटा राइट आंसर दबो वेरी गुड 1933 यस पायल सामंतराय पायल आज क्लास रे अछि है कि यस 1933 विल बी द राइट आंसर हियर 1932 जो दोचो दैट हमें कहि परिबा द कम्युनल अवार्ड बाय हमर मैकडोनाल्ड नाथले कोन कहलो राम से मैकडोनाल्ड तांको द्वारा कम्युनल अवार्ड पाइथिले एंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट रिप्रेस हेतिला आपनकर 1932 रे साउंड आपनकर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्युअर हेतिला जहार इंपैक्ट स्टिल कंटिन्यू थिला 1932 पर्यंत सेटा को हम रिलेट करि परिबा बट द राइट आंसर आपनकर कोन हबो 1933 जोटा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिश करिथिला व्हाइट पेपर that is summarizing कोन ना constitutional proposals based on the third round table conference जोटा कि आपनकर नवंबर रु डिसेंबर 1932 रे हेतिला केबे हेतिला ना नवंबर रु डिसेंबर 1932 आपण माने सब बेले 1932 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेतिला ता अकॉर्डिंग सब ए मारिलो किंतु द क्वेश्चन इज डिमांडिंग समथिंग एल्स कोन डिमांड करूची ना आपनकर व्हाइट कलर कथा पचारि देला तो व्हाइट पेपर केबे हेतिला That means the constitutional amendment हैला constitutional proposals हैला सेटा सब लेखा हेतिला जो पेपर रे सेटा स्टार्ट हेतिला आपन 1933
Am I clear? The Government of India Act 1935 according that marked the blueprint for provincial autonomy. है ना? मैम एनटीपीसी रे कौन 26-27 रे वैकेंसी बाहर बार चांसेस अछि दैट इज अ हाई चांस श्रीनिवास नहीं शिवानी दास ओके आसा सो व्हाइट पेपर कंटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल proposals based on the British government आपनकर कॉन्फ्रेंस हेतला 1932 रे but it was in the March 1933 आसा the Tura is situated on which comes under the mid extremely humid agroclimatic zone extremely humid जल्दी कहला हरिहर एथरा हसीबार कोन प्रयोजन रहिला को मते टिके ओ भी टिके हसे the Tura is situated on which hill that which comes under the mild extremely humid agroclimatic zone कोन रहिबा मते कहिलो को hills very good Antolina that was in the Garo hills कोड रहिबो right answer Garo hills why not Lower hills आपनकर को जगह अछि मते कहिलो Lower hills जोटा का आउ कोन कहूचे ना लुसाई बोली ताको हमें कहूचे ए Lower hills को हमें आउ कोन जानि छे लुसाई बोली जानि छे कि लुसाई हिल्स बोली आको हमें जानि छे यस और नो ये आपनकर कोठी अछि कहले ये आपनकर मिजोराम रे प्रेजेंट अछि कोठी प्रेजेंट अछि ये आपनकर मिजोराम रे प्रेजेंट अछि दैट इज नॉट इन द मेघालय ओके बट आपनकर गारो हिल कोठी प्रेजेंट अछि नाइ गारो हिल जोटा कि हमें कहूचे टूरा इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वेस्ट गारो हिल्स जोटा कि प्रेजेंट कोठी रहूची ना ये आपनकर मेघालय हैला मेघालय रे ये प्रेजेंट रहूची क्लियर कंग्रेचुलेशंस अमित 6 भूल देखो एबे त आसिली एई रे आपनकर मते कहले देखि एई क्वेश्चन आंसर दियो जदि मु जानिबी तमानकर आगु को राइट हेबार अछि मते कहले जयंतिया हिल आपनकर कोठी प्रेजेंट अछि ये आपनकर वेस्टर्न साइड रहिला गारो हिल मेघालय रा बट जयंतिया हिल तमानको ऑप्शन दोची सेवन सिस्टर्स मानक भीतर ही अछि कोठी अछि यस मेघालय रा ये ईस्टर्न पार्ट रे अछि वेरी गुड चंद्रशेखर ये भी आपनकर कोठी ना मेघालय रे अछि एंड इट इज प्रेजेंट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मेघालय देन आसलो खासी हिल कोठी अछि जल्दी खासी हिल आपनकर कोठी अछि मते टिके को टिके जल्दी गरी खासी जयंतिया मेघालय अच्छा खासी भी आपनकर कोठी मेघालय that contains the Shillong and the कण ना चेरापुंजी मैसूरन बेल्ट हमें कहि परिबा रिसीव करूची extremely rainfall को एरिया that is the wettest place on the earth हमें कोन कहू कहूचे ना खसी हिल को कहूचे या अकॉर्डिंग मन रखिथिबो this is again an important point wettest place on the earth हैला क्लियर जीवा नेक्स्ट मते कुह व्हाट इज द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन एबे क्वेश्चन लेवल देखा ठीक हे गला काई एमिति नई न देखनु त माने कर डैश आसो what is the drainage system what is the drainage pattern of the rivers originating from the northern plains कोन हबो कहिलो ऑप्शंस कोन अछि मते कुह that is the radial that is dendritic that is the centripetal or the trellis centrifugal already तो माने पढिचो having any idea centripetal कहिला माने कोन बुझुचे फास्ट ऑफ मते आगा आंसर दियो आंसर कोन हबो dendritic very good कोन आंसर हबो ना dendritic radial कहिले कोन बुझुचो ना जोटा कि स्ट्रीम फ्लो करिवो कोठी की ना आउटवर्ड फ्रॉम ए सेंट्रल हाई पॉइंट रु जते बेले आउटवर्ड को फ्लो करिवो हमें ताको कोन कहूचे ना दैट इज द रेडियल that is the streams flow outward the flow outward from the central land हाँ ना नहीं ए जो dendritic कहूची that means what मते को dendritic माने कोन ए जो आपनकर आसिला कोन रेडियल रो किछ एग्जांपल आपन माने देई परिबे जेमिति कि सपोज अमरकंटक हेला हिमालयन volcano eruption हेला like the domes रो रही छै हमर तो फॉर बेस्ट एग्जांपल आपन माने एठी अमरकंटक को नै परिबे okay and what do you mean by the dendritic exactly dendritic कहि देला आंसर घोसी देइछ पर dendritic माने कोन जानि छ
That is the most common drainage pattern in the northern plain. That means river branches like the tree limbs. माने no matter गोटे main river रु आपनकर बहुत सारा distributary river हेई परिबो. The main river माने river branch like the tree limbs भलिया form हेई पारे. For example हमें कहि परिबा कोठी occurs हुए ना where the rock structure is uniform, no structural control थिबो माने किछि भी जे कोनोसी आडू को कोना से फ्लो करी पारिबो. इन दैट सेम हम कहि परिबा इवन गंगा प्लेन को नै परिबे, यमुना सिस्टम को नै परिबे, आपनकर घागरा हेला, गंडक हेला, ए सब गुडा आपनकर कोथरे ना डेंड्रिटिक रे पळिबे. बुझि पारले डेंड्रिटिक कहले कोन बुझछो जते बेले गोटे मेन रिवर बहुत सारा ब्रांच रिवर आसी जिवो दैट इज द डेंड्रिटिक. क्लियर. एंड सेंट्रीपेटल कहले कोन बुझछो ना रिवर फ्लो टुवर्ड्स द सेंटर. ए जो रेडियल रो जस्ट ऑपोजिट आपनकर कोन रहिबो ना सेंट्रीपेटल. जस्ट लाइक द सेंट्रीफ्यूगल इज जहां रेडियल से सेंट्रीपेटल हेले कोन होची ना आपनकर इनफ्लो हबो. द फ्लोटा आपनकर मझी को आसीबो सेटा को हमें कहूचे सेंट्रीपेटल. तो सेंट्रीफ्यूगल कोन जब बाहर को पळोची दैट मींस द रेडियल हबो. होना नै मते को तो सेंट्रीपेटल कहिले द रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स द सेंटर डिप्रेस्ड और द बेसिन. क्लियर. एति की बुझी परिबा डिप्रेशन और द बेसिन फॉर्म हे कि आपनकर सेंटर आडू आसीबो जेटा आपनकर गंड फॉर्म हुए. एग्जांपल आपण माने राजस्थान ना संबर लेक को नै परिबे. होना नै मते को राजस्थान ना संबर लेक को आपण माने इठी नै परिबे. दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द सेंट्रीपेटल फॉर्म. संबर लेक फॉर द राजस्थान. देन मते कहले ट्रेलिस कोन रहउची किछि किछि नुवा जिंस सिख सब बेले कोन से पुन्ना घिसा पिटा जिंस जानिबो को मते कुह व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेलिस. That occurs the region with the folded mountains. जो जगह रे आपनकर कोन ए टाइप रो माउंटेन सिस्टम्स थिबो, फोल्डेड माउंटेन सब थिबे. हन नै ता भीतर जो रिवर फॉर्म होची ता भीतर जो सब रिवर आपनकर फॉर्म हबो ताकू ही हमें कोन कहि परिबा. That is the river mountains and the alternating hard soft rock no matter जते बेले origin हबो कोटू ना गोटे पीक रु से त फ्लो ही हबो टुवर्ड्स द कोन लोअर जे कोनसी ग्राउंड को दैट इज फाउंड इन द विंध्य हेला सतपुरा रीजन हेला सेठी हम ताकू कहि परिबा दैट इज द ट्रेलिस. बुझी परिलो कोटू ना माउंटेन्स रोड आपनकर फोल्ड हबो माने फ्लो हबो खास करी की फोल्ड माउंटेन्स रु जते बेले ओरिजिन हबो फ्लो हबो ताकू ही हमें कहि परिबा. फॉर एग्जांपल आपण माने नै परिबे एठी कहा को ना विंध्य रेंज सतपुरा रेंज हेला एडा को आपण माने लिखि परिबे. Am I clear? बुझी पाला what is radial, what is dendritic, what is centripetal, what is trellis. जदी एग्जाम रे पढिबो ऊपर को नै की बसिबनी होना नै मते को क्लियर बेस क्लियर. और जदी एग्जाम रे पढिबो ऊपर को नेबो. आसा नेक्स्ट क्वेश्चन. So the drainage pattern of the rivers originating from the northern plain is the dendritic. हेला तो देखो ए टाइप रे आपनकर प्लेन फ्लो थाए. डिफरेंट को जगह को भी देखो ट्री रो लिम्स लाइक द थाए ना सही हेला. नेक्स्ट मते को that a very heavy concentration of the Malwa settlements of the Chalcolithic period was found in the जल्दी कहिला कोन कहउछ ऑप्शन 8 heavy concentration of the Malwa settlements of Chalcolithic period was found in को जगह रे देखिया को मिले was found in where quick. ऑप्शन गंगा बेसिन की मध्य प्रदेश एरिया सेंट्रल बेसिन पळे आसीबो बाबा रे सेंट्रल बेसिन से पळे आसीबो. यस दैट इज द सेंट्रल नर्मदा बेसिन. कोन हबो ना सेंट्रल नर्मदा बेसिन विल बी द राइट आंसर. द गंगा बेसिन हेले कोन कहउछि दैट इज नॉट अ मेजर एरिया ऑफ द Chalcolithic Malwa culture because Ganga basin is associated with the Neolithic phase. The latter culture आपनकर ऐड हेसी. The central Narmada basin आपनकर कोथि almost 2000 to 1200 before common era रे एक्टिव थिला. तो आपनकर कोन समथिंग महेश्वर हेला ईरान हेला कायथा हेला तो एगुडा किछि किछि ना आपनकर दैट इज नॉट दैट इंपोर्टेंट बस जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम सेइंग बट छाडी दियो हेला. जस्ट जान मन रखो दैट ए वेरी heavy concentration of the Malwa settlements of Chalcolithic period was found in the central Narmada basin. Clear? Next. Which of the following rivers does not originate from the peninsular plateau? देखो आसीगला लेवल क्वेश्चंस गोटे गोटे टिके आसीबो डिफिकल्ट मिसा मिस न हेले कोन मजा आसीबो क्लास रो को सब तो इजी पीची लेमन क्विजी हेजिबो. आसा
कौन हम राइट आंसर मते कहिलो which of the following rivers does not origin from the peninsular rivers origin ये आपनकर peninsular river रु हो नाही कोडा हम मते को which of the following river महानदी पळे आसिला हां की महानदी आपण मानकर पळे आसिला जिबा गोटे गोटे करी कि जिबा हाँ सबू तो जी जोटा मारला पर तम सब डेइब कौन एटा आंसर अच्छी देखीदेल गंडक कौन आंसर कहले तुम सब सी मार्च चंबल हो आस राइट आंसर कौन एठी कहूची ना द गंडक क्लियर सो फास्ट देखो सोन रिवर आपन विषय सोन रिवर विषय देखी दियो मिस्टर पंडित एंड पंडिती हैला हाँ 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 चेना बेला चंद्र एंड भागा आज्ञा चंद्रशेखर तो मते कुह सोन रिवर आपन ओरिजिन कोठ होईची ना अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश री ओरिजिन हेची and this is a clear peninsular river through the flows into the Ganga so ये आपनकर कोथरे गला ना जेहेतु गोटे branch river of the Ganga main river of the main tributary of the Ganga so ना आप कहि परिबा this is a peninsular होना नहीं yes or no रे आंसर दबा खाली हैला then ये origin कोठ होला ना आपनकर अमरकंटक मध्य प्रदेश क्लियर होना नहीं मते खाली कहबो then गंडक आपनकर कोठ आसिला ना ये origin हेची not in the peninsular plateau but in the Himalayan range कारण नेपाल तिब्बत बॉर्डर रु आपनकर origin हेची किए गंडक आपनको इमेज रे भी देखैथिली रे इमेज रे आपनकर एठी गंडक देखैथिली एई पाखा पाखी पळे आसे ओइरा इमेज शो करिनी ए पाखा पाखी आपनकर गंडक पळे आसे एई पाखा पाखी एई मानको आसे जिवो हैला आसा तो गंडक विल बी योर राइट आंसर होना नहीं मते को जोटा कि tributary of the माने गंगार tributary but the perennial glacier fate एटा हमें कहि परिबा yes 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 कोन हैला देवी प्रसाद पंडा एमिति एते सारा yes लिखिचो कि ओटे प्रपोज कला कि अरे देवी प्रसाद को कि ओटे प्रपोज कला कि क्लास मझरे से एते जोरे yes मानलानी मु देखि पालिनी कि ऊपर स्क्रॉल कला ना तो मिस कर देली कि मु हो आसो द चंबल इते एमिति की यस करे इते डेस्परेटली की यस लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 28 टा यस के लेखे जस्ट टेल मी 28 तरह यस के लेखे एमिति जने डेस्परेटली प्रपोज करिवो एंड जने चाहूथबो हां से प्रपोज करू तापर ही सेती टाइप रो यस बाहरिवो हां ना देवी मन में लड्डू फुटा हाँ हाँ चलो तुम के करिवेनी अमित आस सो द चंबल पळे आस चंबल कहले कौन बुझुच विंध्य रेंज रु आपनकर ओरिजिन हेछि ना नै मते को मध्य प्रदेश रो विंध्य रेंज रु ओरिजिन हेछि हां ना नै मते को विश्वरंजन क्लास मझिरे तो मस्ती मजाक टे करिया पड़िबो ना आस मु भी बोर हेजिबी राइट टू अंडरस्टैंड आस सो आपनकर ए चंबल रिवर आपनकर कहार ई सोन रिवर रहला गंगार सोन रिवर आपनकर अल्टीमेट कहार ना गंगार ट्रिब्यूटरी चंबल आपनकर अल्टीमेटली कहार ना यमुनार ट्रिब्यूटरी हन नै मते को एंड महानदी को तमाने केमती कोन करी के रिलेट करलो ए पर्यंत भी भाबी पारुनी केमती कोन महानदी को माने केमती कोन रिलेट करलो हन दैट इज सिहावा हिल वर्सी छत्तीसगढ़ रु आसीची ईस्टर्न घाट एंड दिस इज द पेनिनसुलर रीजन हन नै को मते नेक्स्ट चलो so the Gulf Stream is a fast warm ocean current in which ocean कहले जल्दी यार आंसर टिके दियो वेरी गुड इवनिंग देवी प्रसाद पंडा थिले एबे देवी दत्ता मिश्र आसलेनी अरे वाह हो देवी मानकर आविर्भाव होची अलगा भयंकर रूप रे जल्दी वार्म करेंट ऊपर क्वेश्चन पची द गल्फ स्ट्रीम इज अ फास्ट warm ocean current in which ocean को ocean सहित रिलेट करिया हमें आपको को ocean सहित yes that is in the Atlantic Ocean very good so option y जदि हमें जिबा option a कोन अछि ना साउथ
माने साउदर्न ओशन कहा सहित रिलेटेड द वार्म करंट सहित एग्जांपल हमें नहीं परिबा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एक्सटेंशन को नहीं की दैट इज द कोन ना साउदर्न ओशन को हमें नहीं परिबा कोन नहीं मते yes or no the pacific ocean हेले हमें कोन कहि परिबा that is the warm currents in pacific like the कोन कुरुशियो हेला ईस्ट आपण कोन ना ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हेला ता सहित भी हमें रिलेट करि परिबा even the indian ocean हमें कहि परिबा that is the warm currents here but the ओघांस हेला एक्सेट्रा में रिलेट करि परिबा ईस्ट अफ्रीकन कोन कोस्टल करंट भी आसुची बट अटलांटिक ओशन विल बी द राइट वन हैला नेक्स्ट आसो so the gulf stream is a powerful warm and swept atlantic ocean current that flows from the gulf of mexico along with the eastern coast of the unified तो कोठु को पर्यंत आपनकर फ्लो होची you can have a look here clear next चलो मते को which of the following neighboring countries of India has the highest number of million cities अरे वाह highest number of millionaires माने बहुत सारा millionaires माने प्रेजेंट राइट मते को what would be the right answer quick ऑप्शन अरे देवी मन दुख करिकी पळेला की क्लास रू ना ना अच्छा दिबा देखाउ छी आसा तो मते को which neighboring country in India or of India has the which neighboring country of the India has the highest number of million cities कोठी आपण कर अछि मते खो टिके तमाने इमेजिन भी करि परिबनी कांगाल झाला सब कांगाल माने ना कि that is the Pakistan हमें कहि परिया बांग्लादेश has the several large cities आपण माने जानि संती ढाका आपण माने जानि संती खुलना राजसी बहुत सारा अच्छी बट नेपाल रे आपण मान जानि संती वेरी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बट पाकिस्तान में कहि परिबा has the highest number of million plus cities among the India's neighbors हैला लाइक आपण मान जानि संती कराची हैला लाहौर हैला एंड आपनकर रावलपिंडी कराची लाहौर माने कराची लाहौर रावलपिंडी हैला मुल्तान हैला एमती बहुत सारा आपनकर ना अछि हैदराबाद भी अछि माने पाकिस्तान रे हां इस्लामाबाद भी हैला ताकू भी आपण माने रिलेट करि पाए हैला इस्लामाबाद ताले बहुत रिच हे गला हैला नेक्स्ट आसा ए ऐसी वाला पा among India's neighboring countries Pakistan has the highest number of million plus cities including the Karachi Lahore Fisa माने फैसलाबाद रावलपिंडी आपनकर गुजरानवाला मुल्तान ऑनेस्टली कहबी मु कराची विषय रे जानि छे किछि लाहौर विषय रे देन रावलपिंडी विषय रे जानि छे मुल्तान विषय रे जानि छे बाकी ए गुजरानवाला पेशवार या विषय रे इवन द फैसलाबाद एबडा मु जानथि माने फैसलाबाद ए विषय रे जानथि हैला नेक्स्ट आसो द ईस्टर्न sorry yes the asthenosphere is a mechanically weak layer beneath which part of the earth acha आपण मान जानि सदी the troposphere stratosphere mesosphere thermosphere and the exosphere yes or no तो या भीतर मते को the layer the asthenosphere हमें कहू छै ताकू this is a layer beneath the which layer options तम मान को सामने रे क्विकली मते को exosphere ionosphere lithosphere or the troposphere quick option C सबु मारि दोछ lithosphere ना कि कारण नाटा सब तुम सेमति लागु कि asthenosphere lithosphere पूरा भाई भाई लागु चंदी ना कि हां सो exosphere आपण माने जानि संदी कोन outer most layer of the atmosphere almost 700 km ऊपर को हमें गले कोन पाउछे ना atmosphere 700 km ऊपर को गले ही हम पाई पाउछे that is the layer exosphere होना नहीं then ionosphere आसिला that is atmosphere layer with ionized particles कोठी मिलिबो ना आपनकर ionosphere रे मिलिबो ionized particles मानक सहित that located between the 700 plus exosphere this is 62,000 km 60 to 1000 km भीतर आपनकर ionosphere देखिबा को मिलिबो yes or no clear or not बाकी रहला lithosphere that is partly हमें कहि परिबा माने partially molten condition रे थाए very low seismic volcan माने कोन that is the velocity is आपनकर very low थाए and the high attenuation रहे थाए and the allows करे कोन ना lithospheric plates to move the plate tectonic movements आपनकर हुए कोठी ना about the lithosphere सहित हम ताको रिलेट करि परिबो that allow the lithospheric plates to move that the plate tectonic हैला नेक्स्ट मत देखो from which region is the
westerly jet stream responsible for bringing western disturbance into the Indian subcontinents? Arabian, Mediterranean, East Siberian or the Caspian? कौन हबो right answer मते टिके कहिला? Right answer कौन हबो? From which region does the westerly jet stream bring west? कौन western disturbance to India? Western disturbance कहले आपण माने कोठी जिबे? Very good, that is for the Mediterranean. अच्छा, Arabian कहले कौन बुझिबो? ना the Arabian region contributes the moisture to the western disturbance. ये आपण को moisture contain करे, so moisture आपण को provide करिवो. But the origination of the disturbance is not here, that is in the Mediterranean. Clear? Good evening, Panda ma'am Zuhar. Hey bhai, Panda ma'am आसी मन डाकलेनी. School कथा मन पड़ियाला. आसो. So the western disturbance that affect the weather over North India are extra tropical storms originating in the Mediterranean region. They are carried towards the Indian subcontinent by the subtropical westerly jet stream जहाँ को हमें STWJ बोली कहूचे. Clear? The flow आपनकर केमिति हुए ना Mediterranean रू almost आपनकर here is आपनकर India उत्तराखंड पर्यंत आपनकर flow हुए the Mediterranean flow है ना जोड़ा कि आपनकर western side रू ही disturbance आसे. Clear? Jiba next. मते को from which region of the Himalayas does from which region of the Himalayas does the river Brahmaputra originate? को रीजन आसुची कहले ब्रह्मपुत्र आपनकर ओरिजिनेट हे कि क्विकली आंसर दियो जल्दी जल्दी आंसर दियो भयंकर लेवल नित लागले जल्दी आंसर दियो फ्रॉम व्हिच हिमालयन रीजन डज द ब्रह्मपुत्र ओरिजिन कोठ होईची यस दैट इज फ्रॉम द नॉर्दर्न कोठो ना नॉर्दर्न रू ओरिजिन हेची वेस्टर्न कहले त माने कोन कहबो ना इंडस हेला झेलम हेला चेनाब हेला रवि हेला ब्यास हेला एबो सब आपण माने वेस्टर्न खुनिबे कोन ना इंडस झेलम चेनाब रवि ब्यास एंड ऑल दिस एवडा आपनकर कोठी ना वेस्टर्न अकॉर्डिंग जीवो कोन नाही मते को कोठी जीवो ना वेस्टर्न अकॉर्डिंग जीवो ब्रह्मपुत्र डजंट ओरिजिनेट हियर इन द वेस्टर्न बट इन द नॉर्दर्न तो ईस्टर्न कहले कोन बुझिबो ना आपनकर तीस्ता रिवर हेला तीस्ता रिवर कोठू ना ईस्टर्न रो आपण रिलेट करि परिबे नॉर्दर्न हेले ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेटिंग आपण जानि संती आ कोन ऑलरेडी मु तमन को हिमालयन ओरिजिनेटिंग रिवर विषय कहि सारिछि कोन नै मते को यस नेक्स्ट मते को व्हिच टू वाटर स्ट्रीम्स मीट एट तांडी नियर द कीलोंग इन हिमाचल प्रदेश हिमालय रो सबुतिक रिवर विषय ऑलरेडी कहि सारिछि कोन नै मते को तो मते एबे कुह व्हिच टू वाटर स्ट्रीम्स मीट एट तांडी नियर द कीलोंग इन हिमाचल प्रदेश रो कीलोंग भितरे मते कहिलो टिके जल्दी आंसर देला कौन कहूछ जल्दी देखिबा एबे ही कहउतला कि गोटे चंद्र एंड भागा एबे ही के कहउतला चंद्रशेखर बोधे कहउतिले चंद्र एंड भागा विषय रे चंद्रशेखर कुआडे गला चंद्र एंड भागा को धरि कि आपण के जो पंजारा एंड वाघू रहउची दीज रिवर्स in the Maharashtra keep it in your mind ए जो आपनकर पंजारा एंड वाघो रहउची ये आपनकर कोठी रहउची ना ये आपनकर महाराष्ट्र रे रहउची हला ओरिजिनेटिंग मीटिंग प्लेस तांग दि जनकर महाराष्ट्र रे रहउची एंड व्हाट्स अबाउट द बिंदुसार एंड सबरी बोथ रिवर लाइक बिंदुसार आपनकर महाराष्ट्र फ्लो करूची एंड सबरी इज द ट्रिब्यूटर ऑफ द गोदावरी जोटा कि हम कहि परिबा ओडिसा गोदावरी कोठी ओडिसा छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश ए तीनटा भीतर रहइबो सो सबरी आपण माने रिलेट करि परिबे ओडिसा सहित प्लस छत्तीसगढ़ सहित प्लस आंध्र प्रदेश सहित बट वेयर इज द बिंदुसार को हम कोन कहि परिबा ना बिंदुसार इज नथिंग बट फ्लोज इन द कोठी ऑब्वियसली ये भी आपनकर कोठी ना महाराष्ट्र बाकी रहिला आपनकर चंद्र एंड भागा क्लियर चंद्रभागा विषय ऑलरेडी जानिचो आपनकर को जगह रहइबो चंद्र एंड भागा चेनाब रिवर आफ्टर मीटिंग दे फॉर्म अ चेनाब रिवर इंपोर्टेंट फॉर द हिमालय रिवर सिस्टम हम नहीं मते को क्लियर हां चलो सो पेनुगंगा जोटा कमे कोन पेनुगंगा बोली कहूचे एंड द वर्धा पेनुगंगा एंड द वर्धा आपनकर कहा सहित रिलेट करिवो कहलो जल्दी पेनुगंगा एंड वर्धा ये आपनकर तेलंगाना एंड महाराष्ट्र रीजन सहित रहिबो कि दिस द ट्रिब्यूटरीज इन द तेलंगाना रीजन एंड महाराष्ट्र रीजन जो रिवर सब आसुची तार ट्रिब्यूटरी मते को
तमानकर आखि ना गाच बाटी हाँ तमानकर आखि ना गाच बाटी बा तेलंगाना एंड महाराष्ट्र पाठ जो ब्लैक बोर्ड लिखा से कंसंट्रेशन देखत मैम कौन लगे पिंधि से छाड़ी बदमाश दल हाँ नेक्स्ट देखो Which of the following constitutional amendment act constituted the State Finance Commission? कौन कही जल्दी कह Which of the following constitutional amendment act? हाँ नहीं गाच बाटी भद्र दल आस Which of the following constitutional amendment act constituted the State Finance Commission? तो स्टेट रो फाइनेंस कमिशन ऊपर हमें कौन कहबा 74th अमेंडमेंट आसीबो 73 आसीबो वेरी गुड स्टेट अकॉर्डिंग किए से 76 मारला किए से 76 मारला कौन तांग ना किए से महापुरुष दैट इज पेरी मोहन नायक पेरी मोहन ओडिशा मु जन्मरु क्यों तो मैंने एबे जानलो आस तो कौन होची एटा होची 73rd अमेंडमेंट एक्ट कहा अकॉर्डिंग हबो दैट इज अकॉर्डिंग टू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट हैला Sorry, I didn't get it what you are saying. Sameer Sahu. Anyway, आसा तो 74th आपण मानु कोन कहूची मते कहलो 74th amendment 1992 रे हेतिला मने पडुची that deals with the urban local bodies माने municipalities को नेकी कहा सहित ना urban local bodies को नेकी urban local bodies को नेकी ये हेसी that means urban local bodies किए की municipalities ना municipalities मन रही बत्ती की 76th amendment हेले कौन हबो को मते बाघ बाघ तमे डरी ना आहुरी डरिबो आसो तमे देखो 75th amendment according 1992 रे मन रख 1992 रे 74th हेतिला 76th आपनकर 1994 ना 96 रे केबे हेतिला रे 92 हेले तापर 94 रे हेतिला ना 73 हां 74 पर 75th 76th ना भूल भाल कर देली बोधे 74 आपनकर केबे हेतिला मते टी कहलो 74 1992 रे हेतिला राइट तो 76 ता हेतिला 1994 रे हां 76 ता 1994 ये आपनकर 1992 रे हेतिला टिके चेक कर दबो टिके डेट ता बाउंस होची हां हैला तो 75th amendment act आपनकर कोन ना 1994 रे हेतिला दैट रिलेटेड टू व्हाट द रेंट कंट्रोल लेजिस्लेशन कोन ना रेंट कंट्रोल लेजिस्लेशन ऊपर एटा हेतिला देन द 73rd आपनकर द राइट वन एटा आपनकर अमेंडमेंट केबे हेतिला ये भी आपनकर 1992 रे ही हेतिला एते जिंसा मन रखियो नेक्स्ट चलो मन रखिबो कहली माने मन रखिबो दैट्स इट नो मोर सेकंड ऑप्शंस हैला आसो तो which act that enacted in 1919 introduced the scheme of diarchy in the provinces of the British India जल्दी कहिलो जल्दी quick Peace Act Peace Act enacted in 1919 introduced the diarchy in the provinces. That is the Government of Indian Act. कौन Government of Indian Act that is 1935. कौन Option B. Yes, yes, Deepak Kumar Panda. Right. तो आपनकर इंडियन काउंसिल एक्ट कहले कोन बोलछे देयर आर सेवरल इंडियन काउंसिल एक्ट आपण मान जानि सन 1861 नै थिला 1992 रे हेतिला सॉरी 1861 ने 1892 रे 192 रे एथि तीनटा आपनकर हेतिला बाकी 99 ने आपनकर मॉले मिंटो रिफॉर्म हेतिला एटा मन रख 1909 रे आपनकर कोन हेतिला ना मॉले मिंटो रिफॉर्म हेतिला
गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आपनकर केबे हेतिला 1935 रे लेटेस्ट वन हेतिला बट 1919 रे हेतिला गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट दैट इज द कोन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आमे जोटा कहूचे 1919 रे आपनकर जोटा हेतिला एटा आपनकर कोठी 1919 रे हेतिला एटा को हमें मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कहूचे माने पडुची तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बोली कहूचे व्हाट्स अबाउट द राउलेट एक्ट गाइस व्हाट्स अबाउट द राउलेट एक्ट एटा आपनकर केबे हेतिला 1919 ने रिप्रेस हेतिला द रिप्रेसिव एक्ट फॉर द डिटेंशन विदाउट ट्रायल आपनकर हेतिला 1919 रे माने पडुची यस 1878 हमें कौन कहि परिबा तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपनकर 1878 रे हेतिला दैट एक्ट द रेस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस प्रेस अंडर द लीटर तो आपनकर एटा कोन हेतिला ना द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपनकर 1878 रे ही हेतिला 1878 रे एक्ट आपनकर पास हेतिला अंडर द लीटर गवर्नमेंट हैला चलो नेक्स्ट बा पक्का तो मते को who has the power to appoint the census commissioner to estimate the population of the persons belong to the ST communities in the state under the readjustment of representation of the scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa bill 2024 अच्छा मते कहलो who appoints the census commissioner for the कोन estimating ST population under the bill कोडी Goa bill 2024 रे हेतिला जल्दी मते देखो जल्दी ऑप्शन यस दैट इज द ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करिथिला ऑप्शन डी को खुशी रे ऑप्शन डी यूनियन मिनिस्ट्री हे गला आपनकर हां स्टेट गवर्नमेंट आपनकर कोन ना स्टेट गवर्नमेंट कैन रिकमेंड इट बट अपॉइंटमेंट आपनकर सेंट्रल गवर्नमेंट दबो सेंट्रल गवर्नमेंट मींस द सेंसस इन इंडिया is conducted the under registrator general and the census commissioner आपण मानकर एटा अपॉइंट करंदी by the central government under the act 1948 the census act 1948 according एटा हबो मन रखिता census act 1948 बुझिला मैम एसएससी क्वेश्चंस की चंद्रशेखर तुमको क्वेश्चंस केमिति लागुची मते को न्यू लागुची ना नाही क्वेश्चंस बहुत इजी अछि जोडा कि तुम मानको एबे दरकार नाही एबे हम पाखे टाइम अछि हम बहुत सारा न्यू क्वेश्चंस जानिबा जेतले एग्जाम पाखे अछि हम एडको रिवाइज करिबा हैला हां द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स व्हाट इट डज दैट मे असिस्ट इन द पॉलिसी मैटर्स बट डजंट अपॉइंट द सेंसस कमिश्नर द अपॉइंटमेंट पावर इज ऑलवेज विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज द होम मिनिस्ट्री पावर हैला पढ़िले द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट हैला नेक्स्ट आस द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कौन कहिला ना द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ व्हाट कहा द्वारा हुई मते कहिला एते इजी क्वेश्चंस देखो देबी को इजी लागुची क्वेश्चन था तमन को डिफिकल्ट लागुची कोआडो सब आछ को जॉइंट सिटिंग कहिला माने कोन बुझिबो जॉइंट सिटिंग कहिला माने यस देखो ई राइट आंसर देला बा देखो तथा भी त माने कि बी के ऑप्शन आछि व्हाई बी व्हाई दिस कोलैबोरेटिंग स्पेशल रूल्स मेंशन्ड बाय द कैबिनेट इज इट और कथा इज त मानकर स्पेशल रूल जोटा तमन कैबिनेट करे दैट द माने कोन एग्जीक्यूटिव प्लेस देयर इज नो रोल स्पेशल रूल कोठी आछि जोटे एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस करंती जोटे एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस करंती देयर इज नो रोल there is always the role in the procedural rules of the parliament that means eta apan kon jibo cabinet cannot frame the rules for the joint sitting always eta apan lok sabha hi interfere karibo lok sabha only interfere karibo the joint sitting of the parliament is governed by the rules of lok sabha सब बेले एटा मु केडी सर को क्लास कला बेले भी देखि छी माने केडी सर ए क्वेश्चन टा को मिनिमम 40 थर तमन को करि सारिबे ना तमने सेठी भी भूल करूछ हाँ so joint sitting is provided like कोठी हुए provided under the article 108 माने पडुची under article 108 that presided by the speaker of the Lok Sabha or the deputy speaker only the session को presided किए करि परिबे only speaker करि परिबे else the speaker is absent in that case the special
provision have the deputy speaker that is mentioned on the article 108 को article mention अछि ना article 108 रे बाबा ये mention अछि और नहीं को मते hence हमें कहि परिबा the governed by the rules of the procedure by the location only am I clear भूल हबनी हाँ next आस So next, how many directive principles of the state policy were added by the 42 or the 42nd Amendments Act of 1976 to the original list? एबे मते कहिलो बढ़िया क्वेश्चन ता अछि आई थिंक त मानको भल लागबे आंसर मते जल्दी टिके कुआ how many directive principles were added by the 42nd constitutional amendment 1976 रे there is a 4 5 6 7 or the 6 7 2 4 everything कुआ 4 पक्का 5 के माला से देवबुरु नायक और सॉरी डम्बरु नायक डम्बरु हमें एमिति भूल करबा जदी मु पूरा एमिति डम्बरु बजे देबी the right answer will be the 4-1 कौन आसीबो ना 4-1 कौन कौन 4 आपन कर होची जो 42nd आपन कर अमेंडमेंट कहा अकॉर्डिंग हेतला ना 1976 रे एडेड हेतला न्यू डीपीएसपी एटा भी केडी सर 50,000 थर तुम पढ़े सारेनी डीपीएसपी को अंडर आर्टिकल 39A 43A 48A और 39F ए चारटा जिंस होना नहीं मते कुह गधस्थल ए चारटा आपन सब बेले पढ़ंती ना नहीं डीपीएसपी विषय मु एटा निजे तम मानको पे क्लास एते बेले मु जस्ट एंती देखि दिए केडी सर एटा रिवाइज करछंती आई हैव दैट इन माइंड तो कौन रहउची ना आर्टिकल 39A तो आर्टिकल 39A रे आपन कौन मेंशन रहउची ना अबाउट द फ्री लीगल एड कौन कहउची एठी ना फ्रीली किछि हमें अवेल करि परिबा ना नहीं द फ्री लीगल एड विषय कहउची आर्टिकल 39A रे व्हाट्स अबाउट द आर्टिकल 43A the participations of the workers in the management कौन आर्टिकल 43A रे ता मेंशन रहउची then what's about the article 48A the protection of the environment 48A रे आपनकर environment EVS लिखि दोची एठी आपनकर 43A रे मेंशन कर दोची the participation of the workers लिखि दोची so that you can remind it later then also article 39F रे कोन आसी the protection of the children 39F that is the protection of what the children होना नहीं मते को क्लियर डरी की से आंसर तो ना दी खाली देखु जंती 6 will be the incorrect 7 incorrect everything is incorrect was the 4 will be the correct as it explained कोन बेटरली हैला आउ आगु को जिबा ना इठी उडे पॉज लगे देबा त मानकर अवस्था बहुत देखि दया लागुची मते आगु को जिबा ना इठी पॉज लगेबा नेक्स्ट क्वेश्चंस काली करि देबा 30 टा केबे जाई होनी त माने को क्वेश्चन उडा एते डिफिकल्ट लागुची न बुझे की गले त माने खाली छटपट हो Oh, my dear bachas and bachis, class तो जहाँ प्रेजेंट रहुच कौन मु तुम कहबी पाठशाला पढ़ी जमी गोटे गोटे पंडित प्रबर हो गलानी तेणु तुम मान कि कही पारुनी ए मौसुमी सहित मोर गोटे पर्सनल कथबार्ता अच्छे संगे काली कथा नंबर काढ़ी अच्छा देख तो तुम टाइम टेबल टी देखी थी वेदांग वन डे रे केमती कोन क्लास होची आपण मान जानसंती 7 to 8:30 आपण करेंट अफेयर्स होची 10 AM रे अगेन ओडिया होची एंड आपण मान जानिचंती 11 AM रे आपण जोगेश सांगर मैथ एंड रीजनिंग अल्टीमेट डे रे रहूची 4 PM रे कंप्यूटर विकी सांगर एंड कंप्यूटर पिंकू सांगर अल्टीमेट रे रहूची एंड 8 PM रे पिंकू सांगर इंग्लिश देन 9 PM रे केडी सांगर वंदे भारत एंड 10 PM रे सुदीप्ता मैम कर ओडिसा जीके रहूची एतिकी क्लास टाइमिंग राति 10 टा रे मोर सब दिन क्लास रहउची बाकी वेदांत टीचिंग रो क्लास टाइमिंग आपण मान देखि परिबे तुम टीचिंग चैनल रे क्लास करचंती 9 to 11 आपण कर सीडीपी रहउची प्रेरणा मैडम कर 5 टा to 6 टा इंग्लिश रहउची पिंकू सान कर गोटे दिन
पिंकु सांगर गोटे दिन मोर अगेन पिंकु सांगर अगेन मोर काली आपणकर कोन पिंकु सांगर अछि परदिन पुनी मोर अछि हैला मु टिके नॉनवेज देवरा नेछि कारण नॉनवेज टिके लंच आवर रे दाबी की खाई साला परे टिके रेस्ट नेला परे मो काई तमान को क्लास करी मु ओसीएस क्लास करबी हैला So it was all your schedule about the teaching examination. Next, the Vedang Civil Services जो माने क्लास करू चंदी बहुत सारा important questions. No matter तो माने prepare करू छ और करू न आसी की टिके at least वो टाइप रे questions आसी ताकू टिके देखो. So that माने को जो fear factor अछि ना सेटा टिके टिके दूर हबो. हैला. So एटा रहउची टाइमिंग 5 टा रु 6 टा मोरो एंड आपनकर अर्पिता मैम कर अल्टरनेटिव डे रे रहउची. बाकी 9 टा रु 10 टा 11 गोटे रे 7 टा रु 8 टा केडी सर एंड आपनकर चंदन सांगर अल्टरनेटिव डे रे रहउची हैला मैं अमित मैम गाली करिवे मौसमी हां हम मौसमी गोटे जदि जानि न ताहाले अननेसेसरी काहे के सब माने मिछ कथा स्प्रेड करूछ तबे किछि हबो त मु तो तम्मान को सहित ही शेयर करबी ना तो खुशी रे तम्मान को सहित शेयर करबी गाइस आई एम हैप्पीली एंगेज्ड कहबी ना नहीं मते को मते कहबी ना नहीं पूरा खुशी रे कहबी कि तम माने काहे एते ओरिड होउछ मु तो पूरा खुशी रे तम्मान को सहित शेयर करबी फोटो देबी तम माने भी खुशी रे नाचिबो क्या मैडम को एंगेजमेंट हे गला मैडम को बाहागर हैला एवरीथिंग ना नहीं को मते रिंग भी देखेबी देखो रिंग भी पिंधिची बोली सी रिंग अछि को मते रिंग देखै थांदी ना फ्रेंड रो एंगेजमेंट थिला तो मु जाईची दैट्स इट एंड ताकू नै कि तम माने मो बेस्ट फ्रेंड रो एंगेजमेंट थिला मु बस जाईथिली अटेंड करिया पई ताकू नै कि तम माने एते उडौच कथा माने बाध्य हे कि मु पार्टी कोलुची ना बेसलेस कथा वाईटी सेशन ने जोगेश सर कहिले मु भाबिली सत्तरे बट मु स्प्रेड करिनी ओनली केडी सर को पेड क्लास रे कहिथिली मैम मु जानिनी किए कहितिला कोन कहितिला सबुठी सुनली की त मानु कहूची आ मौसुमी क्लास रे कहउथिला व्हाई दिस कोलैबोरेटी जेमिति जहा पुओ दरकार हबो सेटा मु जानची मते को टाइप रो पुओ दरकार सेटा मो बापा मा जानि चंदी इवन दे कैन फाइंड बेटर तो तम माने ओरिड हुअनी तम माने को टाइप रो क्वेश्चंस दरकार मते कुओ आई कैन डू बेटर दैट फॉर यू तम माने ओरिड हुअनी मते को टाइप रो पुओ दरकार हैला तम माने को मुंडो जो जगह रे बिंथिबा कथा सेई जगह रे बिंधु किसी भी गोटे टॉपिक उठा हाइप बनै दियो एंड सेटा हाइप बनिबो पिला माने आसीबे मैडम एंगेजमेंट हैला दैट्स इट मॉक टेस्ट पाई मिस्टर एसआई एस्पिरेंट अच्छा तमे प्लीज टिके कांटेक्ट करि दियो हेल्पलाइन नंबर को आपण माने एठी हेल्प पाई पारे हैला बाकी टेलीग्राम चैनल इज हियर आपण माने एठी स्कैन करंतु टेलीग्राम रे जॉइन होंतु सो दैट आपणकर एंड रे मु जो पीडीएफ शेयर करिवि सेठी आपण माने को पाई परिबे दैट्स इट नथिंग मोर टू से बाकी तमाने जानो तमनु कोन लागिबो न लागिबो मु तम लागिबा ऊपर त मु चली परिबि ना होना नहीं को रागुनी मते हस लागिस त माने कथा सुन कि रागुनी इट्स ओके मौसमी नाउ क्लियर नाउ एवरीवन क्लियर सी आई हैव ओनली वन रिंग इन माय हैंड जेते दीटा रिंग पिंदिबी सेते खुशी रे तमान को देखेबी गाइस आई एम हैप्पीली एंगेज्ड एबे तो ओरिड हुआ नहीं हैला चलो bye love you all take care but first of all do prioritize your parents this would be your first priority no one else in the world thank you so much आमर ब्राह्मण घर आइंस बाइंस हुएनी भात डालमा खट्टा खीरी खाइबो तमानु सब डाके हैला और अन्नटे हबो डालमाटे हबो खट्टा हबो खीरी हबो आ जदी बापा हां कले पांपड़ टिके करबी नहले सेती खाइकी जीव सब समस्त को डाकिबी डोंट वरी
रुह चुपचाप जाइए शुआ बाय।